देखो हम बेसिक की टर्म्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। तो कॉन्स्टेंट मोशन क्या होता है? इट इज़ अ मोशन विच कैन नॉट प्रोड्यूस आर्बिट्ररी इन any manner. Example, motion along a specific path is the simplest example of one Cartesian motion. अब हम पढ़ेंगे force of constraint क्या होते हैं. The force by virtue of which they restrict the motion of the system. Such force are termed as the force of constraint. फिर है degree of freedom क्या होती है? The number of independent way in which a mechanical system can move without violating any constraint which may be imposed is called the number of degree of freedom of a system. फिर है the number of degree of freedom f are 3n minus k, that is f is equals to 3n minus k, n is equals to number of particle, k is equals to number of independent constraints. फिर है generalized coordinate क्या होते हैं? To describe the configuration of a system we select the smallest possible number of variables. These are called the generalized coordinate. How to choose a suitable set of Cartesian generalized coordinates? So number one, their value determine the configuration of the system. Number second, they may be varied arbitrary and independently of each other without violating the constraint of the system. अब हम पढ़ेंगे D'Alembert principle, जो कि सिग्मा I is equals to f I minus k p I dot multiply delta r I is equals to 0. f I is equals to external applied force, p I dot is equals to effective force, और delta r I is equals to virtual displacement. Virtual displacement is assumed infinitesimal charge of system coordinate occurring while time is constant. It is called the virtual rather than real since no actual displacement can take place without the pausing of time. अब है लैग्रांजियन जो होता है L इक्वल्स टू टी माइनस वी होता है, हैमिल्टोनियन H इक्वल्स टू टी प्लस वी होता है, वेयर टी इज काइनेटिक एनर्जी और वी इज पोटेंशियल एनर्जी. लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? डी बाई डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट माइनस के डेल एल अपॉन डेल क्यू के इज इक्वल्स टू 0. हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन क्यू के डॉट इज इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल पी के, और पी के डॉट इज इक्वल्स टू माइनस के डेल एच अपॉन डेल क्यू के dot. The development of classical mechanics is based on the Newton 3 law. Number 1, the law of inertia or Galilean law, the law of force and the law of action and reaction. The classical mechanics explains correctly the motion of मतलब जो हमारी कौन सी celestial bodies like planet, star and microscopic as well as micro terrestrial bodies moving with non-relativistic speed v is very less than equal to c. c is being the light of space, light speed of light in vacuum. अब हमारा है inequalities of classical mechanics are number 1, it does not hold the reason of atomic dimension, like it cannot explain the non-relativistic motion of atom, electrons or protons etc. Number 2, it could not be explained the